A very warm welcome to one and all. Welcome back to the today's session. Today we have our guest speaker, Dr. Suraj Singh Bhadoria, sir, from Paral University. Sir has did BHMS from in Indore and MD from Bharati Vidyapeeth, Homeopathy Medical College. And sir has also been a researcher and a professor and published many articles regarding in many reputed journals and Scopus journals. We welcome you, sir. We welcome you all the participants to the today's session. Session is all yours, sir. Thank you. Okay. First of all, I'm very thankful to providing such a huge platform for exploring our knowledge. So again, I'm very welcome to all of you. आज जो हमारा टॉपिक है वो है फार्मेसी इन जनरल। तो आज हम जो है फार्मेसी के बारे में जनरल व्यू और उसके कितनी ब्रांचेस है वो सारा हम जो है थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फार्मेसी। As we know, pharmacy is a branch of science, okay, which deals with the so many parameters, which is related to the identification of drug substances, selection of drug substances, collection from various parts of the sources for preparing the medicine, compounding, combining effect, preservation of such drug substances, preparation, potentization, which is a very unique feature in our homeopathic pharmacy, standardization, which means to the quality control, the quality assessment on both the quantitative as well as the qualitative analysis, drug proving, homeopathic pathogenetic trial, and drug dispensing. So basically, these all parameters are included in the pharmacy. So pharmacy is a huge branch. It is not only a just textbook or a few references. It is related with a separate branch. So this branch help us regarding the complete knowledge of drug. Okay, so first, what is identification? Suppose when you go to the market for purchasing some materials or the food items, so first you are going to identifying that particular items or the substances. Similarly, when we do practices in pharmacy, so the first criteria is identifying the sources, identifying those sources from which we prepare the medicine, from which we prepare or collect the raw material of our drug. So identification is the very, very important part. Now see, for identification, there should be integration of multiple branches or multidisciplinary actions. Suppose if we talk about animal source, there are so many sources through which we prepare the drugs like plant, animal, mineral, sarcodes, nosodes, allersodes. So there are so many sources. So while collecting or identifying the source in particular animal source, animal group, we need a animal, we need a particular knowledge in the zoology. So there should be a specialization. So every branch, every technique, every field need a particular or a specific specialization. So identification means when we identifying the source by various historical background, by their taxonomical classification, by different groups. So identification is the major aspect. Identifying the source depends on many parameters. Maybe the macroscopic, maybe the microscopic, maybe the morphological. So there are so many parameters through which we are going to identify such sources through which we prepare the medicine. Next is the selection. Now the selection plays a major role. Which part is going to select it? Which part is going to used for the further formulation
for preparing our medicine for some other medicinal product. Okay, so selection is the major part. Selection always depend on the part used, which part having maximum chemical compounds, which part having maximum alkaloidal properties. Suppose if a plant X having maximum chemical composition in their leaf rather than other parts, so the leaf is going to collect and extracted the juice from that particular part. So this is the selection criteria. If suppose Y plant, the maximum alkaloidal property present in their roots, and if we collect the drug from the stem or leaf or flower, so there is no need and there is no advantages in the aspect of therapeutic value, in the aspect of efficacy of drug substance. So while selecting the drug, the important criteria is in which part there is a maximum chemical composition, because every species of plant, every different crop varieties, they have different chemical composition, alkaloidal property in different various parts. Clear? Next is collection. Collection means at what time we collect the drug substance, in which climatic condition, according to the time duration, according to the geographical area, according to the nature of soil. So these are the various parameters which included in the method of collection. Collection is again very important part. जैसे पहले के समय in ancient time, when we talk about Ayurvedic system, so before going to collect the drug from the plant, they always do a prayer in front of that particular source. So while doing this prayer, there is a, what we can say, a dynamic action, increasing in the vitality, increasing in the therapeutic force in that particular source. But nowadays we are not doing like much more this type of practices. So collection plays a very important role. So when we talk about other system like Ayurveda, Unani, naturopathy, so there are different methods in a different field, in a different area for collecting the drug substances. In our homeopathy, as we know, we are homeopath. So collection always depend upon the parameter of time, the parameter of climatic condition, the parameter of the nature of soil, the nature of species of the plant. So there are different parameters or the factors influencing the collection of drug substances. Suppose there are some species or there are some few crops or the plants who develop their therapeutic value while midnight. So in during midnight or full moon or in under the influence of sunlight, their alkaloidal property, their therapeutic value is going to increase. So this is a time to collect the drug substances. So these are related with the external or environmental factor also. So while collecting the climatic, the time, the nature of soil, everything is very important. Clear? So this is a major aspect of pharmacy. Next is the compounding and combining. Generally, this compounding and combining, these are generally related with the preparation or mixture of more than one compound. Suppose when we talk about compounding, so when the A element combined with B and when it forms C, so this property of C, it is far away and differs from A and B individually. So this is a compounding. जैसे कि आपने कोई एक एलिमेंट ए लिया, एक बी लिया, दोनों को मिलाया और उससे कोई एक नया तत्व, नया कंपाउंड बना by combining this A and B. So this is a compounding. Clear? So while preparing the medicine, there are so many preservatives, there are so many drug substances, vehicle. So sometime when we mix this drug, vehicle and the preservative in a definite proportion as per the pharmacopoeia, so the new product or the compound will have some different properties based on their physical and the chemical as compared to this individual element. So this may happens.
So this is a compounding effect. So generally it happens when the property, the chemical property and the physical property of element A and B, when it combines, so something, there is a synergistic effect. Because of that, there is a formation of some new compound or a new molecule. Clear? So this is a compounding. Combining means simply when A combined with the B and when it form AB. So this is a combining. जैसे A B के साथ मिला तो A का physical chemical property along with the property, physical property of B, when they unite together, so they form AB. So that physical and the chemical property of AB resemble with the or similar with the A and B individually. So this is a combining effect. So similarly, when we do pharmaceutics, when we talk about industrial preparations or various formulations, external applications, so while mixing the drug and the vehicle along with the preservative in a definite proportion, so sometimes they form a new compound in which the property, their chemical property and the physical one resemble with the previous their A and B element individually. So this is combining. So it is a basic difference between the compounding and combining. So these are the two main effects and the mixture and the formulation while doing or preparing the medicine. Next is preservation. See, preservation of raw material, preservation of medicine, preservation of while doing the preparation. These are the major aspect in the pharmacy, not only in homeopathic pharmacy, pharmacy in general. So what is preservation? Preservation means when we preserve the alkaloidal property of that particular drug or medicinal product at certain time interval. So this is a preservation. Okay, preservation, it doesn't mean only to keep the drug inside the ball or inside the some container. While preserving the medicinal property, their physical property, their chemical property, their therapeutic value should not be altered or modified or changed. So this is the major objective of preservation. Clear? Suppose when we talk about the vegetable kingdom and the plant kingdom, so generally all these drug substances should be preserved in the hard glass bottles, not the colorful bottles, away from the sunlight, away from the dampness, away from the strong smelling bottles, and it is closely tied. So there is no entry of the air or there is no such opening while preserving or while fixing that particular drug material in the container. So this is the preservation. So there are different guidelines given by CCRH regarding with the preservation of raw material, preservation of medicine. ठीक है, तो ये अलग अलग गाइडलाइंस दी गई है. So the preservation part is the major aspect. While doing preservation, sometimes there is a corrosiveness, sometimes there is a rancidity in various drug material, generally in the mineral group. So because of that particular chemical reaction, their therapeutic value or their therapeutic effect goes down. तो उस कारण से हम जो है प्रिजर्वेशन जो है हमें सही तरीके से ध्यान से जो है सारे रूल्स और रेगुलेशन के अंडर में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसके तहत हमें ड्रग को प्रिजर्व करके रखना चाहिए इन करस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. क्लियर? Preparation. Generally in our homeopathic pharmacy, when we talk about the method of preparation, so there are two methods: old method, Hahnemannian method, and the new method. So new method, they have maceration and percolation. In old method, they have mother tincture, mother powder, mother solution, various classes, class 1 to 9. So these are various methods through which we prepare the medicine from the drug. क्लियर? तो अगर हम मैसरेशन की बात करते तो मैसरेशन यानी इन जनरल व्हेन द ड्रग सब्सटेंसेस आर गमी, जूसी, म्यूसिलेजिनस.
So that particular drug substances should be kept or used or prepared by the maceration. When the drug substances are hard, non-gummy, non-mucilaginous, okay, rough, so they are utilized and they are undergoes into the percolation. So these are the various methods through which we prepare the medicine from our drug substances. Clear? While preparing medicine, again, the alkaloidal property, the medicinal property should not get down or should not be affected by some external environment or some other factors. Clear? तो जो हम थेरापेटिक इफेक्ट उस पर्टिकुलर सोर्स या ड्रग की चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाएगी. तो प्रिजर्वेशन और प्रिपरेशन करते समय हमें कई सारे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना पड़ता है. Now, when we talk about potentization, now it is a unique feature. It is a specialty, originality of homeopathic pharmacy. Clear? So, what is potentization? Potentization is a mathematico-mechanical process through which we arouse the latent curative power of the drug substances. Sorry to Right? interrupt, sir. Hello, Yes, sir. yes, yes, ma'am. Sir, I think you are explaining, if I am not wrong, you are explaining the first slide itself, sir, or else First any other. slide. First slide. First slide. Okay, sir. So basically in standardization, so potentization, we accelerate scientifically, we accelerate the mass particle to massless particle at the higher level by decreasing their quantity while increasing their quality. So this is the potentization. Clear? Next is standardization. Standardization is the quality aspect or the qualitative analysis of the drug substances or any medicinal product or finished product. So it comes under the two main parameters, quantitative analysis and qualitative analysis. Next is drug proving, which is known as homeopathic pathogenetic trial. So drug proving is again very important, and it is a procedure. It is a systematic procedure through which we evaluate the pathogenetic power of that particular drug substances. And finally, drug dispensing. So there are different methods and various forms through which we dispense the drug material or that particular molecule in the living entity. So this is all about pharmacy. Clear? Now, in next, we will discuss what is the history behind this pharmacy in general. So, when we talk about the history of pharmacy, so history of pharmacy, it is a modern and independent science. It start the first third of 19th century. Before then, pharmacy evolved from antiquity as a part of medicine. Before the advent of pharmacists, there existed apothecaries that work alongside priests and physicians in regard to patient care. So it is in short, what is the general view regarding the historical development of pharmacy? So previously there was no such standard method or a design or a procedure or the instruments to formulate our medicines. So it is generally regarding with the superficial part. It is generally regarding with the not in detail. It is generally regarding with the introduction or the inclusivity of the medicine. Clear? So when we talk about the era, so there are different branches, or what we can say different century through which this history of pharmacy evolved. Prehistoric pharmacy, ancient era, middle ages, industrialization. Industrialization is a period in which there is a development of some pharmaceutical industry for preparing, for preserving, for formulary, for pharmaceutics, for storage of drug substances or medicine. So industrialization is a major aspect in the
historical development of pharmacy. So this is a major aspect of pharmacy when we talk about industry, when we talk about pharmaceutical industry. So generally, these are the bodies which are going to prepare, which are going to give the birth of new and novel formulation, novel medicine, and the drug substances by various sources, and the different specific method, different tools with the different design. So this industrialization develops the pharmacy in a broad spectrum. Last one is a late modern period. So these are in general or a basic parameters which involves in the history of pharmacy in general. क्लियर? तो जैसे हम होम्योपैथिक फार्मेसी में भी जब हम डिस्कस करते तो सबसे पहले जो है देयर इज अ रॉ मटेरियल, देयर इज अ हर्ब्स. सो इन दैट era they are going to use or making medicine from the herbs, from the raw material, from the crude material, crude substances. Then naturally it goes more and more deeper in the sense of formulary part. Now it comes to the Egyptian medicine. Then afterward there is a development of pharmacopoeia. So pharmacopoeia, it gives the general rules and regulation for preparing the medicine. Afterward it comes to the late modern period. तो इस तरीके से हम जो है ओवरऑल बोल सकते हैं कि किस तरीके से जो है फार्मेसी का एक डेवलपमेंट, एक ग्रोथ जो है since from the previous era it started, and it goes and goes and goes in a right direction. अभी हम देखेंगे. Now we are talking about AI in pharmacy, artificial intelligence in pharmacy. So it is a new modern period. Clear? So it is the advancement in the history of the pharmacy. Now when we talk about branches, so generally in branches there are various branches of pharmacy. The first branch is pharmaceutics and computational pharmaceutics. It is first branch, pharmaceutics and computational pharmaceutics. Second is pharmacokinetics and pharmacodynamic. Next is medicinal chemistry and pharmacognosy, which is a major aspect, the huge branch of this pharmacy. Pharmacology, pharmacy practice, pharmacoinformatics, and pharmacogenomics. So these are the major branch of pharmacy. Now in detail, when we talk about this pharmaceutics and computational pharmaceutics, what it is? This branch of pharmacy, it defines the method which help in forecasting a molecular structure. So the main objective of this branch is to focus on the molecular structure which is present in our drug substances or in a medicine. The physiochemical property of that particular drug substances along with the motion of that particular molecule and the atom which is present in our drug is a major objective of pharmaceutics and computational pharmaceutics. तो अभी हमने क्या समझा? फार्मास्यूटिक्स और कंप्यूटेशनल फार्मास्यूटिक्स जो है वो फार्मेसी की ऐसी ब्रांच है जिसमें कि उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं और उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी along with the movement, the migration, motion of that particular molecule and the atomic structure in the drug or medicinal substances. The computational pharmaceutic, it is generally related with the AI. जैसे अभी हमने हिस्ट्री में बात करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो it is related with the AI and big data tool, resolution in the drug delivery process. It resolves the process of drug delivery system by providing more efficient and cost effective and data driven approach. Efficient, more efficacy, cost effective and data driven approach. These are the three main advantages in this particular branch. So pharmaceutics and computational pharmaceutics, it is
a modern, and it is linked with the AI, and it gives a more effectiveness in the therapeutic value of drug or the medicinal substances. Next one is related with the pharmacokinetics and pharmacodynamics. Now, what is pharmacokinetic and pharmacodynamics? पीडी एंड पीके मॉडल, इसको हम पीडी और पीके मॉडल भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है जब हमने पैरासीटामोल ली इन द लिविंग एंटाइटी, तो उस पैरासीटामोल के ड्रग कंपोजिशन ने कैसे अंदर जाके फेब्राइल कंडीशन को कम किया। सो व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी। सो दिस इज पीडी मॉडल, फार्माकोडायनेमिक मॉडल। क्लियर। अभी अगर हम बात करें होम्योपैथी में, तो इन होम्योपैथी देयर, एज वी नो, आवर मेडिसिन्स आर अल्ट्रा हाई डाइल्यूटेड, it is in the dynamic action. So how we will define this PD model in homeopathy with ultra high diluted medicine? This is one of the biggest challenge in our homeopathic fraternity. Somewhere when we talk about like silica hypothesis, water memory, or plausibility phenomena, or the action of nanoparticles. So these are somewhere the hypothetical part or the phenomena which included in the action of drug substances when the concentration is very less and the quality is more. Clear? तो यहाँ पर हमें फार्माकोडायनेमिक मॉडल जो है उसको होम्योपैथी में अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन के साथ हमें इसको प्रूफ करने के लिए वी रिक्वायर अ various type of instruments, various types of model in animal, in plants and some other living entity, जिसको हम बोलते हैं in vivo study. So this is pharmacodynamic model. Next is the pharmacokinetics. Pharmacokinetics is the इसका रिवर्स, what the body does with the drug. यानी जब पैरासीटामोल ली तब किस तरीके से उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किस तरीके से मेटाबॉलिज्म हुआ, किस तरीके से एक्सक्रीशन हुआ, या टॉक्सिसिटी. सो दिस इज फार्माकोकाइनेटिक्स. सो फार्माकोकाइनेटिक्स इज द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट द ड्रग. क्लियर. तो ये जो है आपको होम्योपैथी में अगर इसको सिद्ध करना है, टू शोन द मेजर एस्पेक्ट ऑफ दिस फार्मेसी, so we have to do more and more advanced research in a right propagation along with the integration of modern pharmacy. ठीक है. जैसे अभी सीबीडीसी जो हमारा प्रोग्राम या सीबीडीसी जो हमारा सिलेबस आया है यूजी और पीजी में, तो उसमें मेजर जो ऑब्जेक्टिव है सीबीडीसी का वो है इंटीग्रेशन अप्रोच इन अवर एकेडमिक पार्ट. तो अगर हमारे यहाँ पे मान लो हमारी यूनिवर्सिटी में एमडी फार्मेसी रन कर रहा है, तो हमें इंटीग्रेशन करना है वेरियस मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम से, तब जाके हम ये जो मॉडल्स है उनको हम हमारी होम्योपैथी में विद आवर अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन वी कैन प्रूव. क्लियर. सो इट इज नॉट ओनली प्रूव्ड बाय होम्योपैथ, इट इज प्रूव्ड बाय डूइंग द इंटीग्रेशन with the multidisciplinary field. Clear. So this is another branch of pharmacy. Next is medicinal chemistry and pharmacognosy. So this pharmacognosy is the branch of pharmacy which deals with the study or the knowledge of crude drug substances obtained by medicinal plants, animals, fungi and some other natural sources. As we know, in our homeopathic pharmacy, in our preparing this homeopathic medicine, there are various types of sources: plant, animal, mineral, vegetable, sarcodes, nosodes, imponderabilia. The newly added sources are allersodes, isodes, tautopathy, oblique, synthetic source. So these three are the newly added sources. So from these sources, how we collect the drug, how we prepare the drug, how we preserve the drug, how we make the drug and vehicle composition, how we standardize the drug, how we dispense the drug. So this is all over related with the pharmacognosy.
So pharmacognosy is related with the complete knowledge of drug. हमें सिर्फ यही नहीं पता होना चाहिए कि हमारे इसमें कौन कौन से सोर्सेज है या दवाई कैसे बनती है या कितनी प्रोसेस है दवाई बनाने की। हमें उस पर्टिकुलर सोर्स के टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन से लेके उसके केमिकल कंपोजिशन से लेके उसके माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, उसके मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, सारी चीजों के बारे में हमें जो है पता होना चाहिए। तब जाके जो है हम एक प्रॉपर थेरेपेटिक वैल्यू या एफिकेसी में उस पर्टिकुलर ड्रग को हम इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये जो है फार्माकोग्नोसी है। मेडिसिनल और द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री is a scientific discipline at the intersection of chemistry and the pharmacy which design and developing the pharmaceutical drugs। तो अभी हमने क्या देखा कि जो मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है ये हमारे केमिस्ट्री और फार्मेसी, केमिस्ट्री इज आल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस एंड फार्मेसी इज आल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस। सो द केमिस्ट्री एंड द फार्मेसी को इंटीग्रेटेड में लाके स्पेसिफिक डिजाइन या फार्मास्यूटिकल ड्रग को बनाने में मदद करती है। तो अगर हमें केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है और सिर्फ हम फार्मेसी की बात करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर एल्कोलॉइडल प्रॉपर्टी या केमिकल कंपोजिशन की प्रॉपर्टी को नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो हमें ये दोनों का इंटीग्रेशन, इन दोनों का इंटरलिंक और कोऑर्डिनेशन में लाके एक स्पेसिफिक डिजाइन को इवॉल्व करना पड़ेगा in the field of pharmacognosy or the medicinal chemistry. Clear? So this is a very important branch in the pharmacy. Clear? अब इसमें चैलेंज क्या है, हम जब भी STSH प्रोग्राम या जब भी हम MD में डेजर्टेशन या PhD में थीसिस की बात करते तो उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस, qualification, quantification of their alkaloidal property, the standardization of that particular alkaloid. We are not only talking about the drug substance as a whole, we are talking about standardization of that particular chemical composition also along with the crude drug or the whole drug. Clear? So this is a challenge in our modern or advanced pharmacognosy. जनरली हम क्या करते, होल ड्रग को लेके हम दवाई बनाते या हम उसके पर्टिकुलर पार्ट को लेके हम जो है उसको फॉर्मुलरी या स्पेसिफिक ड्रग व्हीकल रेशियो में प्रिपेयर करते। तो वहां पर हमें ड्रग के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि उसमें केमिकल कंपोजिशन जो है या जो एल्कलॉइडल प्रॉपर्टी है वो कितने कंसंट्रेशन में है या हमें उसका क्वांटिफिकेशन किस मेथड से करना है, क्वालिफिकेशन किस टूल से करना है और कैसे हमें जो है उसकी एफिकेसी को शो करना है। तो जनरली हम इसमें क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एज वी नो द क्रोमेटोग्राफी is a technique which has been used for the standardization. So there are different types of chromatography: HPTLC, HPLC, GC, GCMS, LCMS, UV visible, sorry, not UV, it is spectrophotometric. So these are the various types of chromatographic technique. Generally for the gaseous substances, the volatile substances, we use GC, gas chromatography. For the liquid non-volatile substances, generally we use HPTLC or HPLC. So there are different methods in chromatographic technique. When we talk about spectrophotometric analysis, so this spectrophotometric analysis, again it comes under UV, UV visible and IR. So this all comes under the major aspect of standardization, qualification, quantification and the study of drug as a whole. Clear? Next is pharmacology. Now, what is pharmacology? Pharmacology is a branch of pharmacy. It is a branch of science which deals with the action of drug. So it is the science of drugs and medications, which includes the substance origin, their composition, how it evolved, how it developed,
their pharmacokinetics, PK model, pharmacodynamics, PD model, therapeutic value, and their toxicity, the ADR, adverse drug reaction. So this is all about the pharmacology. तो जैसे हम बोलते हैं कि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. हर दवा, हर मेडिसिन, हर आइटम्स, हर सब्सटेंस के दो पहलू है. उसका साइड इफेक्ट भी है और साइड इफेक्ट नहीं भी देखने को मिलेगा. इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, द क्वांटिटी यूज्ड इन अ प्रिपेयरिंग मेडिसिन. यानी हम कितनी क्वांटिटी में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको बना रहे. तो अगर मात्रा ज्यादा हो गई, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो हमें उसके टॉक्सिसिटी या एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल सकता है इन लिविंग एंटाइटी. व्हेन वी टॉक अबाउट कंसंट्रेशन लेस, तो जनरली इसमें क्वालिटी ज्यादा आती है, तो वहां पे एडीआर या टॉक्सिसिटी एनालिसिस हमें कम देखने को मिलेगा. तो फार्माकोलॉजी इज अगेन अ ह्यूज एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच इन द फार्मेसी. तो फार्माकोलॉजी में जनरली हम अगर इसके ब्रांच की बात करें या इसके कैटेगराइजेशन या डिवीजन की बात करें, तो इसमें आता है सबसे पहला फार्माकोडायनेमिक और द फार्माकोग्नोसी. सो ये मेजर ब्रांच होती है फार्माकोलॉजी की. क्लियर. तो अगर हम ऑर्गेनॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम होम्योपैथी में अगर हम डिफाइन करें, सो जनरली देयर आर primary action, secondary counter and the curative. So it is just like that. ठीक है. तो this is the major branch of pharmacy. Clear. अगर इसमें हम चैलेंज की बात करें, तो हमारे जो पीजी स्टूडेंट्स हैं या जब हम पीएचडी करते हैं फार्मेसी में, तो फार्माकोलॉजी प्लेज अ मेजर रोल. तो अगर मान लो आपने कोई एक ड्रग डिस्कवरी की है या आपने कोई एक नई मेडिसिन बनाई है, तो उसका किस तरीके से एक्शन आप रिफ्लेक्ट या प्रोपोगेट करोगे इन लिविंग बॉडी, इन अ लिविंग एंटाइटी और प्री क्लिनिकल स्टडी और इन अ क्लिनिकल स्टडी, दैट इज द मेजर एस्पेक्ट और द पैरामीटर इन द फार्माकोलॉजी. समटाइम when there is no proper drug vehicle ratio or no proper concentration of drug, so the efficacy and that action of drug is also going to affected. तो इसलिए हमें जो भी दवाई या फॉर्मुलरी या जो भी एक्सटर्नल एप्लीकेंट या मेडिसिन बनाना है, तो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय द फार्माकोपिया. So when we talk about pharmacopoeia, it gives a specific rule, specific regulations and the principle for certain drugs or the medicine preparing from a different sources. Clear? तो ये हमारा फार्माकोलॉजी आ गया. अब इसके बाद अगर हम देखें, तो इसमें आता है फार्मेसी प्रैक्टिस. फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब होता है दिस टर्म डिराइव द इनकैप्सुलेटेड द रिसर्च, the development, the formulation, the distribution, access and the clinical use of medicines. कैसे हमें मेडिसिन में रिसर्च करना है, यानी रिसर्च इन फार्मेसी जो अभी एडवांस एरा में आ रहा है. कैसे हमें ड्रग को इवॉल्व या डेवलप करना है बाय वेरियस AI टूल्स और सम अदर इंटेलिजेंसी. कैसे हमें फॉर्मुलरी बनाना है, कैसे हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे उसको ऑपरेट या उसको प्रोपोगेट करना है राइट डायरेक्शन में, जिसको हमने एक्सेस बोला है. और आखिरी में जब हम क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमें उसको यूटिलाइज करना है. सो दिस ऑल कम्स अंडर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस. क्लियर. सो दिस इज ओवरऑल रिलेटेड विद द फार्मेसी प्रैक्टिस. अगर हम इसमें चैलेंजेस की बात करें, so when we discover or evolve any new sources through which we prepare the drug or the medicine, so this is a one kind of pharmacy practice. When we develop or make a specific design or specific methodology in that particular development or making the formulation in that particular medicine or the drug substances, this is another criteria in pharmacy practice. So when we comes to formulation, so there are different formulation, liquid base, semi solid base or some other solid base. So these are the formulary. So formulary बनाने के समय कई सारे पैरामीटर्स है.
टेम्परेचर है, प्रेशर है, मटेरियल यूज्ड है, तो ये सारी चीजें जो है हमारे फॉर्मुलेशन बनाने में काम आती है। डिस्ट्रीब्यूशन, access, and the clinical use. These are the after or when we completely prepare our drug. So it is regarding with the final stage of propagating the drug molecule in the living body. So this is pharmacy practice. तो हम फार्मेसी प्रैक्टिस में अगर हम एडवांसमेंट की बात करें फार्मेसी में, तो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, with the help of various AI tools, we can propagate our pharmacy in the right direction. This is advancement. क्योंकि फार्मेसी तो पहले से ही इवॉल्व होती हुई आ रही है, तो नॉवेल्टी का है। जनरली हम बच्चों में भी जब रिसर्च की बात करते, they just do only copy paste or changing the drug, changing the medicine. It is not a complete or advanced research. Advanced research means a new source, a new formulation, not always 1:9, 1:99, some other ratio. Why not? अगर आपके फार्माकोपिया में 1:4 दिया हुआ है, तो क्या आप 1:9 में नहीं बना सकते हो? क्या आप 1:6 में उसको बना के नहीं देख सकते हो? So this is the scientific or the evidence based. दिस इज एडवांसमेंट। व्हेन वी कंपेयर, सपोज अगर आपने एक कोई एक्सटर्नल एप्लीकेंट लिया, उसको 1:1, 1:2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे रेशियो में आपने उसको प्रिपेयर किया। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू कंपेयर देयर क्वांटिफिकेशन और देयर क्वालिफिकेशन फ्रॉम 1:1 to 1:9. Then we can say yes, 1:9 is exact drug vehicle proportion in that particular external applicant, which is given or which is suggested by our pharmacopoeia guideline. So this has to be done. तो हमें इस तरीके से जो है प्रोपोगेशन लाना है और हमारे फार्मेसी जो है उसको एडवांस या उसको एट हायर लेवल तक जो है हमें उसको ले जाना है। अभी हम अगर बात करें इसमें नेक्स्ट ब्रांच की, दैट इज फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स। इट इज अगेन वेरी ह्यूज एंड वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। इट इज रिलेटेड और इट डील्स विद द ड्रग डिस्कवरी। ध्यान से सुनिएगा, ड्रग डिस्कवरी, डेवलपिंग द वेरियस इंटीग्रेटेड अप्रोच इन अ मल्टीपल मैनर्स, द साइंटिफिसिटी जिसको हम एविडेंस बेस्ड बोलते हैं, वेरियस टेक्निक विच हैज बीन यूज्ड टू मेक the specific design for preparing the certain formulation. This includes chemistry, biology, pharmacology, pharmaceutical technology, and extensive use of information technology. यानी ये भी मल्टीडिसिप्लिनरी है। हम इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और इसके अलावा जितनी भी टेक्नोलॉजी या टूल्स है उन सभी को हमें एक इंटीग्रेशन या क्रॉस सेक्शन में जो है हमें उसका यूटिलाइजेशन करना है, ताकि हम एक स्पेसिफिक, एक प्रिसाइज, एक डिजाइन या मॉडल बना सके जिसके तहत हम अपनी ड्रग को प्रिपेयर या फॉर्मुलरी में डाल के उससे मेडिसिन बनाए। दिस इज एडवांसमेंट, दिस इज नॉवेल्टी। ठीक है, अभी हम जो करते हैं जैसे मदर टिंचर हुआ, मदर सॉल्यूशन हुआ, मदर पाउडर हुआ, अब उस मदर टिंचर में कितने अल्कलॉइड्स है, कितने एक्टिव प्रिंसिपल्स है, कितने कंसंट्रेशन में, फिर उस पर्टिकुलर एक्टिव प्रिंसिपल कंसंट्रेशन को लेके उसको स्पेसिफिक डिजाइन में डालना विद द हेल्प ऑफ दिस बायोलॉजिकल टूल, द केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी, द फार्मास्यूटिक्स, or to propagate that molecule in some other specific model. So this is pharmacoinformatics. It is again a very huge branch. It plays a major role in the advancement. When we talk about next, that is pharmacogenomics. So what is pharmacogenomics? Pharmacogenomics, it is generally regarding or related with the role of genome or the genetic material in correspond to the drug action or the drug response. So suppose हमने कोई X drug ली,
जब हमने वो दवाई ली तो हमारे जेनेटिक मटेरियल, हमारे डीएनए में, हमारे जीन में उस पर्टिकुलर एलिमेंट ने किस तरीके से ड्रग रिस्पॉन्ड किया, दैट इज फार्माकोजीनोमिक्स। जैसे हम बोलते हैं वी हैव मेनी कैटेगरीज ऑफ ड्रग और द मेडिसिनल एक्शन, सुपरफिशियल, डीप एक्टिंग मेडिसिन, ठीक है, या हम बोलते हैं पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, या हम बोलते हैं कि हमारी मेडिसिन से जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन को तो चेंज नहीं कर सकते, बट समथिंग हम डिसीज या पैथोजेनेटिक इफेक्ट जो है उसको हम जो है डिमिनिश या उसको हम मॉडिफाई करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन बाय होम्योपैथिक मेडिसिन। क्लियर? तो यहाँ पर भी वही बात बोली गई है कि जब भी कोई एक ऐसी ड्रग दी है जो सुपरफिशियल नहीं है, जो डीप एक्टिंग मेडिसिन है, जिसका इफेक्ट आपके न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल और जो डीएनए है वहां तक उसका एक्शन प्रोपोगेट हो रहा है, तो यानी आप सोचिए कि उसका रिस्पॉन्ड कितना इफेक्टिव होगा, उसका रिस्पॉन्ड कितने हायर इंटेंसिटी पे हमें देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर लिविंग एंटाइटी में। दैट इज फार्माकोजीनोमिक्स। जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट द नोजोड or some other animal kingdom, so these drugs generally when they are going to prove on the living entity, so somewhere they affect in a deeper aspect in a systemic ground। क्लियर? सो उसी तरीके से मॉडर्न मेडिसिन में भी ऐसी कई सारी ड्रग्स हैं कि जब उनको लेने के बाद हमारे जेनेटिक मटेरियल में या हमारे जीनोम में जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम बोलते हैं फार्माकोजीनोमिक्स। सो अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी इन जनरल। क्लियर? तो हम सिर्फ ये नहीं पढ़ रहे आज कि हम पहले मॉडर्न मेडिसिन को पढ़े और फिर हम होम्योपैथिक फार्मेसी को ध्यान दें। इट इज रिगार्डिंग विद ऑल टाइप ऑफ फार्मेसी, चाहे आप आयुर्वेदा बोलो, चाहे आप यूनानी बोलो, चाहे आप नेचुरल मेडिसिन बोलो, चाहे आप हर्बल की बात करो, जितनी भी दवा है, जितने भी ड्रग सब्सटेंसेस है, उन सभी में ये एबिलिटी होती है कि वो हमारे जेनेटिक मटेरियल तक जाके उस तरीके से एक्शन शो करे कि हमारा वो जो जीनोम या जो जेनेटिक मटेरियल है या जो जीन है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है एट सर्टेन लेवल ऑफ इंटेंसिटी। सो दिस इज फार्माकोजीनोमिक्स। सो ओवरऑल these are various branches and the categorization of pharmacy in general। तो इसमें हमने क्या देखा, कई लेवल पे केमिस्ट्री है, कई लेवल पे बायोलॉजी है, कई लेवल पे जूलॉजी है, कई लेवल पे एग्रीकल्चर भी है जिसको हम एग्रो होम्योपैथी बोलते हैं आजकल। और जब इन सब का हम इंटीग्रेशन करेंगे तब हम जाके एक स्पेसिफिक डिजाइन या स्पेसिफिक मॉडल को हम सक्सेसफुली जो है तैयार कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ फार्मेसी इन जनरल। क्लियर? सो दिस इज very very important topic, because before going to homeopathic pharmacy, first we have to know what is pharmacy, what is pharmacy in general, what are the various branches, what are the different aspects and advantages or the limitation in such branches. Afterward we go for the specific branch, that is homeopathic pharmacy. Then we can know what are the originality, what are the speciality, what are the unique feature in our homeopathic pharmacy as compared to pharmacy in general. Clear? So this is all about pharmacy in general. Next time we will discuss about some more factors and the parameters which included in the pharmacy in general, just like sources of pharmacy. So sources में हम देखेंगे कि कौन कौन से sources हैं और उन sources से किस तरीके से दवाई बनाई जाती है और कैसे जो है हम उसको preserve करते हैं. So this is all about the today's topic. Thank you. Hello, sir. Good evening, ma'am.
Good evening, sir. I hope the session is over, sir. Right, sir? Yes, ma'am. Yes, sir. Respected participants, if you have any question and answers, you are welcome actually. I hope they have understood the topic very well, sir, with all your inputs. So I have a question, sir. Like, how come we can relate this type of pharmaceuticals in the terms of research? What are the operators we can embedded with this pharmaceutical research, sir? In terms of सबसे Yes, ma'am. It is very good question, ma'am. First of all, we have to start with the सोर्सेस। तो अभी जो हमारे पास सोर्सेज है, इसके अलावा कौन से ऐसे सोर्सेज है जिससे हम दवाई बना सकते हैं? ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें तो वहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं, जैसे अभी हमने देखा इसमें फार्मास्यूटिक्स में, तो स्टैंडर्डाइजेशन में देर आर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, जैसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, एक्सआरडी जिसको हम बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन और एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर, और इसके अलावा एलसीएमएस हो गया, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, और यूवी इज अ वेरी बेसिक नाउ। तो ये जो सारे टूल्स और जो मशीन है, इवन दो द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सैम एंड टेम, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यू कैन विजुअलाइज द डायनेमिक पावर और द व्हाट वी कैन से अ वेरी minute and the massless structures in our ultra high diluted medicines। तो इस तरीके से आप जो है आप रिसेंट एडवांसमेंट में जा सकते हैं होम्योपैथी में। और इसके अलावा अगर आप फॉर्मुलरी की बात करें, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपके फार्माकोपिया में दिया है 1:9 किसी भी एक एक्सटर्नल एप्लीकेंट के लिए, तो आप उसको 1:1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप उसको प्रिपेयर करिए विद द सेम ड्रग विद द सेम व्हीकल, और उन सभी का जो है क्वांटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन जैसे क्रोमेटोग्राफी हम करते हैं, तो उसके थ्रू जो है आप उसको एडवांस में ला सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें, जब हम एचपीटीएलसी करते हैं तो जनरली हम होल ड्रग को कंसिडर करते हैं। तो आपको वहां पे स्टैंडर्ड मार्कर लेके और उस पर्टिकुलर ड्रग सब्सटेंस को लेके व्हेन वी कंपेयर दिस, so this will give you an idea that how much concentration of that particular active principle or the alkaloid present in our drug substances। Afterward we can segregate this as a different technique। तो ये सारी जो चीजें हैं आप उसमें आपके रिसर्च में इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम फार्माकोलॉजी या हम उसके एक्शन की बात करें, तो जैसे आजकल एनिमल मॉडल जो है हम इसको काफी अच्छे तरीके से जो है टॉक्सिसिटी एनालिसिस में देख सकते हैं। तो एनिमल मॉडल के लिए जो है आप स्पेसिफिक मॉडल ले सकते हो, स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ रैट ले सकते हो, रैबिट ले सकते हो, या एक पर्टिकुलर एनिमल को लेके आप उस पर्टिकुलर ड्रग with the specific dosage, with the specific potency in a specific disease, you can propagate your research work। Don't always believe that pharmacy is only related with the proving on human beings। When we talk about the toxicity analysis, when we talk about the dosage criteria, so there should be a animal model। Clear? जैसे मान लो मैं 10 ग्लोब्यूल एक साथ ले रहा हूं और कोई जो है 2 ग्लोब्यूल एक साथ ले रहा है, तो ये जो सेपरेशन है, ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा डिस्पेंसिंग में, तो हमें इसको स्पेसिफिक और एविडेंस बनाने के लिए एनिमल मॉडल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी यूजफुल and it gives you an idea how this PK and PD model works in our ultra high diluted medicine or in our mother tinctures। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो यू कैन मेक और यूज अ सर्टेन टूल्स विच कम्स अंडर AI फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक डिजाइन, फॉर मेकिंग अ ड्रग पिक्चर, फॉर मेकिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल।
तो ये हम मदर टिंचर में तो कर सकते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन, सो इट इज वेरी फार अवे because our medicines are invisible. They are generally travel in the form of memory, water memory, silica hypothesis. तो हमें जो है इस तरीके से जो है आगे हमारे रिसर्च या एडवांसमेंट के लिए जो है हमारे होम्योपैथिक फार्मेसी में इसको बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कि आप जो है फार्मेसी कॉलेज से, ठीक है, एग्रीकल्चर कॉलेज से, वेटनरी कॉलेज से जो है आप एमओयू करवा के आप इंटीग्रेशन अप्रोच ला सकते हैं। क्योंकि जब हम एनिमल की बात करते हैं, सो देयर आर आल्सो सम मेंटल सिम्टम्स। तो वो जो मेंटल सिम्टम्स है उसका जो एनालिसिस है, उसका जो सेग्रीगेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक वेटनरी वाला ही कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम न्यू ड्रग का इवोल्यूशन या उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें जो है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक या स्पेशलाइजेशन का इंटीग्रेशन हमारी पैथी के साथ करना। और इसके अलावा जैसे अभी जो है हमारे एनसीएच के सिलेबस में रिसर्च, पहले तो रिसर्च एमडी में और पीएचडी में हम देखते थे, अभी रिसर्च फर्स्ट ईयर से जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम जो एसटीएसएच में जो हम प्रोग्राम जो चलाते हैं, या जो हम एसटीएसएच में जो हम रिसर्च करवाते हैं बच्चों को, तो उसमें कोई हमारी एक स्पेसिफिक गाइडलाइन या एक पैरामीटर या एक टूल हम यूज नहीं करते। तो इसलिए हमें जो है रिसर्च को एकेडमिक पार्ट में भी जो है हमने फर्स्ट ईयर से इसको इवॉल्व किया है। तो ये ऐसे कई सारे पैरामीटर्स है और कई सारी टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप जो है रिसर्च जो है ला सकते हो। एडवांस रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, रिसर्च जो है आप उसको राइट डायरेक्शन में with all the ethics, with all the rules and regulation, you can propagate. Thank you, sir, for the in-detail explanation regarding my query. Uh, I hope the participants are also have their queries clear along with this, sir, with the entire topic. Thank you all the participants for the active participation. Thank you so much, sir, for the in-detail explanation. We'll be overwhelming to have the further more sessions. We'll be glad that for the in-detail explanation regarding the pharmacy in journal and its correlation to the research. We'll be glad to have you on